Good evening, students. I am Satyanarayana Saha. You are welcome to SNS Academy. Before we have discussed about Indian polity by M. Laxmikanth. So शुरुआत के पहले हम लोग क्या पढ़ाए थे उसका बारे में थोड़ा डिस्कशन किया जाए। एम लक्ष्मीकांत का ये 7th एडिशन है। इसका पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेकंड चैप्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें बहुत सारा जानकारी आप लोग को मिले होंगे। अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहला वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि इससे कनेक्ट रहने से कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझोगे, क्लियरिटी आएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है, उसके लिए परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी चाहिए, कांस्टेंट एफर्ट चाहिए। एंड इफ यू हेल्प अदर्स, गॉड विल हेल्प यू। सो यू शेयर लिंक। if more students will see my video, then motivation will comes. I will change my strategy of teaching, and I put my best of the best effort. So let us start. चैप्टर 4 सलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम लोग को सलिएंट का मीनिंग समझना पड़ेगा। सलिएंट मतलब इम्पोर्टेंट फीचर्स, कौन सा जरूरत है, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब yesterday we have discussed जो बेसिक लॉ, सुप्रीम लॉ of the country. The Indian constitution is unique in its concept and spirit. Though borrowed from almost every constitution of the world, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitutions of other countries. अगर ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है, दूसरे से आइडिया ड्रॉ किया गया है, फिर भी ये एक यूनिक है, ये महान है, और इसका चलते एक स्टेबल गवर्नमेंट भी रन कर रहा है, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज मीन्स एप्रिसिएबल these things. It should be noted at the outset that a number of original features of the Constitution as adopted in 1949, जो कॉन्स्टिट्यूशन कब शुरुआत हुआ था 9 दिसंबर 1946, कब उसको अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949, कब उसको एग्जीक्यूट किया गया था 26 जनवरी 1950। ये तीनों डेट याद रखना है, कब उसका फर्स्ट शुरुआत किया गया था, कब वो अडॉप्ट किया गया था, कब वो एग्जीक्यूट किया गया था। हैव अंडरगॉन ए सब्सटेंशियल चेंज on account of several amendments. Amendments मतलब changing procedure, particularly 7th, 42nd, 44th, 73, 74th, 97th and 101 amendments. In fact, the 42nd Amendment Act
जो कि 1976 में महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टर्म इंक्लूड किया गया, इज नॉन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द important and large number of changes made by it in various parts of the constitution. तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट को महत्व दिया जाता है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वर्ड इंक्लूड किया गया. हाउएवर इन केशवानंद भारती केस, जो कि 1973, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट constituent power of parliament under article 368 does not enable it to alter the basic structure of the constitution. Salient features of the constitution, क्या salient features है? The salient features of the constitution as it stands today are as follows. ये सब वर्णन किया गया है. फर्स्ट, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. विश्व का सारे कॉन्स्टिट्यूशन अगर रखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्ज है, लेंथिएस्ट है. कॉन्स्टिट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू रिटन like the American Constitution or unwritten like the British Constitution. The Constitution of India is the lengthiest of all the written constitution of the world. It is a very comprehensive, elaborated and detailed document. अगर सारे कॉन्स्टिट्यूशन को रख दिया जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथिएस्ट होगा, और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल, एलाबोरेट और पूरा क्लियरिटी के साथ एलाबोरेट किया गया है. ओरिजिनली 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ए प्रीएम्बल. जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 1949 में, तब यहाँ पर 395 आर्टिकल्स था, जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था और 8 शेड्यूल्स था. तो इसको याद रखना है, कितना आर्टिकल्स था? 395 आर्टिकल्स था. कितना पार्ट्स था? 22 पार्ट्स था. और कितना शेड्यूल्स था? 8 शेड्यूल्स था. प्रेजेंटली इट कंसिस्ट्स ऑफ ए प्रीएम्बल, अबाउट 470 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स, जो कि 470 आर्टिकल्स है और 25 parts and 12 schedules. The various amendments carried out since 1951 have deleted about 20 articles and 1 part, 7th, and added about 95 articles. वहाँ पर the various amendments carried out since 1951 में वहाँ पर deleted हुआ था 20 articles and 1 part और एक तो पार्ट को 7th पार्ट एंड ऐड किया गया था 95 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स, 4A, 9A, 9B एंड 14th A, and 4 schedules 9, 10, 11 and 12. No other constitution in the world has so many articles and schedules. कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स नहीं है. द पार्ट्स, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर मेंशन्ड. वो बाद में टेबल में मेंशन किया गया है. 4 फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द elephantine size of our constitution. They are geographical factors, that is the vastness of the country and its diversity. इंडिया का अगर जोग्राफिकल फैक्टर में देखा जाए तो यहाँ पर डिफरेंट रिलीफ फीचर्स देखने के लिए मिलता है. डिफरेंट कल्चर का आदमी देखने मिलता है, और यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज भी बोला जाता है. हिस्टोरिकल फैक्टर्स, the influence of the Government of India Act of 1935
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, अभी 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। ये सारे 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज फॉलो करते हैं। डोमिनेंस ऑफ legal luminaries in the Constituent Assembly. The Constitution contains not only the fundamental principles of governance but also detailed administrative provisions. ये खाली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस का वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ पर सारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को डिटेल्स समझा गया है। फॉर देयर those matters which in other modern democratic countries have been left to the ordinary legislation or established political conventions have also been included in the constitutional document itself in India. Till 2019, the erstwhile state of Jammu and Kashmir had its own constitution. Jammu and Kashmir में its own constitutions and thus enjoyed a special status by virtue of Article 370 of the Constitution of India. 370 कॉन्स्टिट्यूशन अभी तो हटा दिया गया है आर्टिकल्स को, उसका हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा मतलब ज़्यादा सुविधा अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। In 2019, this special status was abolished by a presidential order known as the Constitution Application to Jammu and Kashmir. Order 2019 में हटाया दिया गया, abolish किया गया। Order 2019, this order superseded the earlier order known as the Constitution Application to Jammu and Kashmir. Order 1954. The 2019 order extended all the provisions of the Constitution of India to Jammu and Kashmir also. Further, the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 bifurcated the erstwhile state of Jammu and Kashmir, वो state बन गया, state of Jammu and Kashmir, into two separate union territories, namely the Union Territory of Jammu and Kashmir and the Union Territory of Ladakh. तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से सेपरेट दो यूनियन टेरिटरी बना है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे को हम बोलते हैं लद्दाख। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्स, the Constitution of India has borrowed most of its provisions from the constitutions of various other countries, as well as from the Government of India Act of 1935. Dr. B.R. Ambedkar proudly acclaimed that the Constitution of India has been framed after ransacking all the non-constitution of the world. तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है, दूसरे से आइडिया ड्रॉ किया गया है, और इसमें ज़्यादातर इंडिया एक्ट 1935 का फीचर्स देखने को मिलता है। और डॉक्टर अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर प्राउडली बोलते हैं, जो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद किया गया है। द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू ए लार्ज एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। The philosophical part of the Constitution
the fundamental rights and the directive principle of state policy. यहाँ पर फिलोसॉफिकल पार्ट दो ठो दिया गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स है और एक ठो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है. Derives its inspiration from the American and Irish Constitution respectively. फंडामेंटल राइट्स जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ किया गया है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है. The political part of the constitution, the principle of cabinet government and the relations between the executive and legislature has been largely drawn from the British constitution. तो कैबिनेट पैटर्न और इसका रिलेशन जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, रसिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन. और जो प्रोविजंस देखने को मिलता है वो ड्रॉ किया गया है कहाँ से ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएसएसआर, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान, ये सब देश से. The most profound influence and material because of the Constitution is the Government of India Act 1935, जो कि profound influence and material source of the Constitution, Government of India Act 1935 दिया गया. द फेडरल स्कीम, फेडरल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंटर और स्टेट का. The federal scheme, judiciary, governors, emergency powers, the public service commissions, and most of the administrative details are drawn from this act. More than half of the provisions of Constitution are identical to or bear a close resemblance to the Act of 1935. The features of the Constitution that have been borrowed, जो कि बोरो किया गया है फ्रॉम वेरियस सोर्स, आर मेंटेन्ड. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी मतलब जो कि आसानी से चेंज नहीं होता है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो चेंज हो सकता है. जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार चेंज हुआ है, जैसे अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज नहीं हुआ है, उसका चेंजिंग प्रोसीजर बहुत डिफ़िकल्ट है. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है, कोई सारे पार्ट चेंज किया जा सकता है और कोई सारे पार्ट ऐसा भी है जो आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता है. Constitution are also classified into rigid and flexible. A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, as for examples, the American Constitution. A flexible constitution, on the other hand, is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made. As for example, the British Constitution, the Constitution of India is neither rigid nor flexible, but a synthesis of both. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ना रिजिड है ना फ्लेक्सिबल है, उसको मिक्स किया गया है. Articles 368 provide for two types of amendments. Some provisions can be amended by a special majority of the parliament. कुछ चेंज करने के लिए मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. वो लोग प्रेजेंट रहेंगे और वोटिंग देंगे. एंड a majority of the total membership of each house. Some other provisions can be amended by a special majority of the parliament and with the ratification by half of the total states.
At the same time, some provisions of the constitution can be amended by a simple majority of the parliament in the manner of ordinary legislative process. Notably, these amendments don't come under Article 368. Federal system with unitary bias. फेडरल सिस्टम क्या है और यूनिटरी क्या है, ये लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया गया है। फेडरल सिस्टम मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसा सेंट्रल कौन सा पावर रखेगा और स्टेट का पास क्या पावर रहेगा और सेंटर और स्टेट का बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये सब वर्णन किया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a federal system of government. It contains all the usual features of a federation: two governments, division of powers, written constitution, supremacy of constitution, rigidity of constitution, independent judiciary and bicameralism. ये सब टर्म लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया है, जैसा टू गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर का डिवीजन होगा, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, जैसे यूनियन में क्या क्या पावर रहेगा, कौन सा सेंट्रल का पावर रहेगा, कौन सा स्टेट का पावर रहेगा और कौन सा दोनों का पावर रहेगा, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू में गवर्न होता है। एक कंट्री गवर्न करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ है जो कि चेंज नहीं किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ठीक से चल रहा है कि नहीं, देश ठीक से चल रहा है कि नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका, जैसे सुप्रीम कोर्ट को गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। एंड बाइकैमरलिज्म, यहाँ पर बाइकैमरलिज्म है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, दो हाउस है, एक डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। डायरेक्टली इलेक्टेड कौन सा होता है? लोकसभा। इनडायरेक्टली राज्यसभा फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। However, the Indian Constitution also contains many unitary and non-federal features. Strong center, single constitution, single citizenship, flexibility of constitution, integrated judiciary, appointment of state, governor by the center, all India services, emergency provisions and so on. ये सब दिया गया है। जैसा यूनिटरी, नॉन फेडरल फीचर्स और स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब दिया गया है। Moreover, the term federation has nowhere been used in the constitution. Article 1, on the other hand, Article 1 में क्या डिस्क्राइब किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, which implies two things. One, the Indian Federation is not the result of an agreement by the states. And two, no state has the right to secede from the federation. Hence, the Indian Constitution has been variously described किया गया है, जैसे फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। अगर फेडरल भी है तो ज़्यादा पावर किसको मिला है? ना सेंटर को मिला है, सेंट्रलाइज करने के लिए। कोई सी फेडरल बाय केसी वेयर बार्गेनिंग फेडरलिज्म बाय मॉरिस जोन्स, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाय ग्रैनवेल ऑस्टिन, फेडरेशन विथ द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग्स एंड सो ऑन। यहाँ पर डिफरेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिफरेंट ओपिनियन दिए हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे दो टाइप का रहता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट और दो हाउस को समझा जाता है।
The Constitution of India has opted for the British parliamentary system of government rather than the American presidential system of government. The parliamentary system is based on the principle of cooperation and coordination between the legislative and executive organs, while the presidential system is based on the doctrine of separation of powers between the two organs. दो organs जैसा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है, जुडिशियरी फुली इंडिपेंडेंट है, उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का दबाव नहीं है. द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज आल्सो नोन एज द वेस्ट मिनिस्टर मोड ऑफ गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट. The Constitution establishes the parliamentary system not only at the center but also in the states. पार्लियामेंट में दो हाउस है जो कि लोकसभा है, राज्यसभा है. और लोकसभा में 543 का इलेक्शन होता है और राज्यसभा का मैक्सिमम 250 सीट्स है. लोकसभा का मेजॉरिटी जो पार्टी लाता है उससे प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है. प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होने के बाद वो लिस्ट आउट करते हैं कौन सा मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मेन कैबिनेट मिनिस्टर होता है. जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 3 टाइप का रहता है: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. उसका सहायता लेकर गवर्नमेंट चलता है. The features of parliamentary government in India are presence of nominal and real executive. Nominal जो कि प्रेसिडेंट को बोला जाता है, रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर. मेजॉरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल करता है. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर. मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर. लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर. डिसोल्यूशन ऑफ द पावर लोअर हाउस, लोकसभा और असेंबली. तो ये सारे फीचर्स हैं. वहाँ पर नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव रहते हैं. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज consisting of both houses of parliament and state legislative assembly. और रियल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टली इलेक्टेड होता है और जिसका मेजॉरिटी पार्टी लीडर को चांस दिया जाता है और वो लोग लोकसभा का ऊपर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. और even though the Indian parliamentary system is largely based on the British pattern, there are some fundamental differences between the two. For example, the Indian parliament is not a sovereign body like the British parliament. Further, the Indian state has an elected head रहता है, republic, while the British state has a hereditary head, monarchy. British had monarchy. In a parliamentary system, whether in India or Britain, the role of the Prime Minister has become so significant and crucial that the political scientists like to call it a prime ministerial government. Synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. Sovereignty और judicial supremacy रहेगा. The doctrine of sovereignty of parliament is associated with the British parliament, while the principle of judicial supremacy with that of the American Supreme Court. Just as the Indian parliamentary system differs from the British system, ये different है British system से. The scope of judicial review power of the Supreme Court in India is narrower than that of what exists in the US. This is because the American Constitution provides for a due process of law against that of procedure established by law contained in the Indian Constitution. Therefore, the framers of the Indian Constitution have preferred
a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. The Parliament, on the other hand, can amend the major portion of the Constitution through its constitutional power. उसके बाद इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इंटीग्रेटेड जो कि चेन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब पार्ट्स है, डिफरेंट नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस a judicial system that is integrated as well as independent. इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है, इसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का दबाव नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इन द कंट्री. Below it, there are high courts at the state level. Under a high court, there is a hierarchy of subordinate courts, that is district court and other lower courts. This single system of courts enforce both the central laws as well as the state laws. Unlike in USA, where the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary. The Supreme Court is a federal court, the highest court of appeal. Supreme Court जो federal court है, जो कि highest court of appeal है, the guarantor of the fundamental rights of the citizens and the guardian of the Constitution. Hence, the Constitution has made various provisions to ensure its independence. Security of tenure of the judges, fixed service conditions for the judges, all the expenses of the Supreme Court charged on the Consolidated Fund of India, जो कि expenses वो एक फंड्स से खर्चा किया जाता है, जिसका नाम है कंसोलिडेटेड फंड. प्रोहिबिशन ऑन डिस्कशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस इन द लेजिस्लेचर, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट vested in the Supreme Court, separation of judiciary from the executive and so on. तो जुडिशरी को एक स्पेशल दर्जा दिया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का दबाव में नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, इंटीग्रेटेड पार्ट है, और इसका फंडिंग भी डिफरेंस है, जिसका कंसोलिडेटेड फंड है, और कोई सा जज रिटायरमेंट का आफ्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है, और मीन्स अगर कोई वायलेट किया कोर्ट को, तो उसको दंडित भी किया जाता है. दिस थिंग्स मेरिटेड. आफ्टर दैट फंडामेंटल राइट्स, जैसे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है, वो मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ नहीं चला जाए और सभी आदमी को सुख सुविधा मिले, इसके चलते फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है. फंडामेंटल राइट्स जो कि पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज, ये पार्ट थर्ड में है. इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर 6 दिया गया है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एजुकेशनल राइट्स. तो राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से 18. आफ्टर दैट राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल्स 19 से 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 एंड 24. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये 29 से 30. और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32.
आप लोग इंटरेक्ट हुए हैं. सो वन क्वेश्चंस, when Indian Constitution came into force, that you have to comment. Originally the Constitution provided for 7 fundamental rights. यहाँ पर भी दिया गया है 7 fundamental rights. However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act of 1978. It is made legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. So, जो राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था उसको डिलीट किया गया 1978 में. द फंडामेंटल राइट्स आर मींट फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. इसका इंटेंशन है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना. दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेरी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर. तो फंडामेंटल राइट्स को कभी लिमिटेशन कर दिया जाता है, सिचुएशन का ऊपर डिपेंड करता है. दे आर जस्टिसेबल इन नेचर. वो जस्टिसेबल है. अगर किसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ वो कोर्ट को जा सकता है जस्टिस पाने के लिए. दैट इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन. The aggrieved person can directly go to the Supreme Court, which can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto for the restoration of his rights. तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स हैं. यही सब रिट्स इशू होता है, जैसे habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. However, the fundamental rights are not absolute and subject reasonable restrictions. Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the Parliament through a Constitutional Amendment Act. ये पूरा रिजिड नहीं है, पूरा मतलब इसको हर समय सेम पर नहीं लिया जा सकता है. अगर सिचुएशन डिमांड किया तो इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है, लिमिट भी लाया जा सकता है. दे कैन आल्सो बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल्स 20 and 21. उसके बाद आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. According to Dr. B.R. Ambedkar, the directive principle of state policy is novel features of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar का opinion से ये novel features है, नया features है, but they are enumerated in part 4 of the Constitution. They can be classified into 3 broad categories. यहाँ पर 3 broad categories में divide किया गया है, जैसे socialistic, Gandhian, and liberal intellectual. The directive principles are meant for promoting the ideal of social and economic democracy. ये एक आइडियल है. जिस तरह इसको एम्बिशन रखकर इलेक्शन होता है, they seek to establish a welfare state in India. सभी आदमी को डेवलप हो, उसको बोला जाता है वेलफेयर स्टेट. एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब में डेवलप होना चाहिए. However, unlike the fundamental rights, the directives are non-justiciable in nature. That is, they are not enforceable by the courts for their violation. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ये नॉन जस्टिसेबल है, इसलिए इसमें कोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है. Yet the Constitution itself declares that these principles are fundamental in the governance of the country
and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. Hence, they impose a moral obligation on the state authorities for their application, but the real force behind them is political, that is, public opinion. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 में है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है और ये गवर्नमेंट का फीचर्स है जो इसको लागू किया जाए. In the Minerva Mills case, the Supreme Court held that the Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between the fundamental rights and directive principles. Fundamental rights और directive principles को बैलेंस के थ्रू से एडमिनिस्ट्रेटिव रन करता है. आफ्टर दैट फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि बोला जाता है कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, जैसे राइट्स रहता है, मतलब इंडियन सिटीजन का कुछ कर्तव्य भी रहता है, उसका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए. द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं किया था. These were added during the operation of internal emergency, जो कि 1975-77 में इंक्लूड किया गया. By the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976 on the recommendation of the Swarna Singh Committee, the 86th Constitutional Amendment Act of 2002 added one more fundamental duty. Part 4A of the Constitution, which consists of only one Article 51A, specifies the 11 fundamental duties to respect the Constitution, national flag and national anthem. रेस्पेक्ट देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को और नेशनल एंथम को. टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people. To preserve the rich heritage of our composite culture and so on. The fundamental duties serve वो रहता है as a reminder to the citizens that while enjoying their rights, they also have to be quite conscious of duties they owe to their country, their society, and to their fellow citizens. However, like the directive principles, the duties are also non-justiciable in nature. उसका बाद रहता है a secular state. Secular state मतलब there is no official religion in this country. The Constitution of India stands for a secular state. Hence, it doesn't uphold any particular religion as the official religion of the Indian states. The following provisions of the Constitution reveal the secular character of the Indian state. The term secular was added to the preamble of the Indian Constitution by the 42nd Amendment, Constitutional Amendment Act of 1976. सेकुलर वर्ड को इंक्लूड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कब? 1976 में. द प्रियम्बल सिक्वर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप. बिलीफ, फैथ एंड वर्शिप ये सब रहना चाहिए. द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. गवर्नमेंट सभी का जिसे जस्टिस मिले उस हिसाब से रहना चाहिए. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. All persons are equally entitled to freedom of conscience
and the right to freely profess, practice, and propagate any religion. Every religious domination or any of its sections that have the right to manage its religious affairs. No person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of a particular religion. Religion का कुछ टैक्स नहीं होगा. No religious instruction shall be provided in any educational institutions maintained by the state. Any section of the citizen shall have the right to conserve its distinct language, script, or culture. All minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. The state shall endeavor to secure for all the citizens a uniform civil code. The Western concept of secularism uh, connotes a complete separation between the religion and the states. ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स का सेकुलरिज्म से डिफरेंट है. वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, जहीं पर रिलीजन और स्टेट का कुछ लेन देन नहीं है, दोनों पूरा डिफरेंट है. यहाँ पर क्या है ना, पॉजिटिव अप्रोच है. यहाँ पर हर रिलीजन्स को हम रेस्पेक्ट देते हैं. दिस नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज inapplicable in the Indian situation where the society is multi-religious. Hence, the Indian constitution embodies the positive concept of secularism, giving equal respect to all religions or protecting all religions equally. Moreover, the constitution has also abolished the old system of communal representation, that is reservation of seats in the legislature on the basis of religion. However, it provides for the temporary reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes to ensure adequate representation to them. Then universal adult franchise. Universal adult franchise मतलब voting system रहना चाहिए. The Indian Constitution adopts universal adult franchise as basics of elections to the Lok Sabha and the state legislative assembly. In this year, election will happen for Lok Sabha. So, and how election will happen? Through universal adult franchise system. Every citizen who is not less than 18 years of age has a right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. जिसका 18 साल हुआ है उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा. और पहले वो 21 ईयर था, इसको हटाकर 11 किया गया, 18 किया गया. कब? 1989. The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by the 61st Constitutional Amendment Act of 1988. The introduction of universal adult franchise by the constitution makers was a bold experiment and highly remarkable in view of the vast size of the country, its huge population, high poverty, social inequality, and overwhelming illiteracy. Universal adult franchise makes democracy broad-based, enhance and the self-respect and prestige of the common people, upholds the principle of equality, enables minorities to protect their interest, and opens up new hubs and vistas for weaker sections. सिंगल सिटीजनशिप, जैसा दूसरे कंट्री में, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप फॉलो होता है, लेकिन इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है. वो जोन सा भी स्टेट का है,
हर का परिचय इंडियन होता है. Though the Indian constitution is federal and envisages dual policy, central or state, it provides for only a single citizenship, that is the Indian citizenship. In countries like the USA, on the other hand, each person is not only a US citizen but also a citizen of the particular state to which he belongs. वहाँ पर दो का सिटीजनशिप मिलता है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप. Thus, he owes allegiance to both and enjoys dual sets of rights, one conferred by the national government and another by the state government. In India, all citizens, irrespective of the state in which they are born or reside, enjoy the same political and civil rights of citizenship all over the country and no discrimination is made between them. यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, अगर जोन सब स्टेट का है फिर भी वो इंडियन है और सिंगल सिटीजनशिप उसको मिलता है. Despite the constitutional provision for a single citizenship and uniform rights for all the people, India has been witnessing communal riots, class conflicts, caste wars, linguistic clashes, and ethnic disputes. ये सब नहीं होना चाहिए. This means that the cherished goal of the constitution maker to build a united and integrated Indian nation has not been fully realized. अखंड भारत means जहीं पर भारत का जाति, कास्टिज्म, लैंग्वेज ये सब में डिवाइडेशन नहीं होना चाहिए, यूनाइटेड रहना चाहिए, इससे डेवलपमेंट होगा. अगर कंपेयर भी किया जाए इंडिया विथ पाकिस्तान, दैन इंडिया मोर डेवलप्ड, sustainable government, then independent bodies. The Indian constitution not only provides for the legislative, executive and judicial organs of the government, but also establish certain independent bodies. जैसा गवर्नमेंट का 3 ठो ऑर्गन रहता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. वो सेंट्रल और स्टेट में रहता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है. दे आर एनविसिस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज द bulwarks of the democratic system of government in India. These are election commission to ensure free and fair elections to the parliament. इलेक्शन कमीशन रहता है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्शन, वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए. द स्टेट लेजिस्लेचर, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब का इलेक्शन होता है. कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. जोन सा जैसे बजट बोला जाता है, एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और इनकम, जो फंड और जो गवर्नमेंट का जो स्कीम वो ठीक से खर्चा हो रहा है कि नहीं उसका ऑडिट करता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, SGI. ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट्स को ऑडिट करता है. ही एक्ट्स एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द legality and property of government expenditure. Union Public Service Commission to conduct examination for recruitment to all India services and higher central services and to advise the President and disciplinary matters. State Public Service Commission in every state to conduct examinations for recruitment to state service and to advise the governor on disciplinary matters. The Constitution ensures the independence of these bodies through various
provisions like security of tenure, fixed service conditions, expenses being charged on the consolidated fund of India, and so on. After that, we have to discuss about emergency provisions. The Indian Constitution contains elaborate emergency provisions to enable the President to meet any extraordinary situation effectively. The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty रहेगा, unity, integrity and security of the country, the democratic political system and the constitution. The constitution envisages three types of emergencies. तीन टाइप का emergency रहता है, जैसा नेशनल emergency, स्टेट emergency और फाइनेंशियल emergency. नेशनल emergency जो कि रहेगा 352. नेशनल emergency मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री अटैक किया इंडिया में तो उस समय नेशनल emergency लागू होता है. और कोई सा स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक टाइप से फॉलो नहीं कर पाया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अब नॉर्मल हो गया तो उसमें स्टेट इमरजेंसी लागू होता है. और फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर कुछ कंट्री को फाइनेंस का डेफिसिट हुआ और कुछ गड़बड़ हुआ तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है. ड्यूरिंग एन एमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल बन जाता है स्टेट गवर्नमेंट से. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू ए यूनिटरी वन विदाउट ए फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बिना अमेंडमेंट से वो पावर हासिल कर सकता है और वहाँ पर यूनिटरी हो जाता है, मतलब पावर का सेंट्रलाइज हो जाता है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देता है उसका हिसाब से चलता है. तो यूनिटरी ड्यूरिंग एमरजेंसी इज ए यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक ये यूनिक फीचर्स है. और थ्री टायर गवर्नमेंट. Originally, the Indian Constitution, like any other federal constitution, provided for a dual polity and contained provisions with regard to the organization and power of the center and the states. Later, the 73rd, 74th Constitutional Amendment Act हुआ था जो कि 1992 में हुआ था, have added a third tier of government जो लोकल, जो सेंट्रल था स्टेट था, उसका बाद लोकल आ गया. वो कब 1992 में. which is not found in any other constitution of the world. जो कि ये दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में दिखने को नहीं मिलता है. The 73rd Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the panchayats, rural local governments, by adding a new part, 9th, and new schedule, जो कि 11 to the constitution. This part provides for a three-tier system of panchayat raj in every state. Panchayats at the village, intermediate and district level. Similarly, the 74th Amendment Act of 1992 gave constitutional recognition to the municipalities by adding a new part 9A and a new schedule 12 to the constitution. This part provides for three types of municipalities in every state. Nagar Panchayat for a transitional area, Municipal Council for a smaller urban area, and Municipal Corporation for a larger urban area. उसका बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलता है किसको? कोऑपरेटिव सोसाइटी को. इन दिस कॉन्टेक्स्ट it made the following three changes in the constitution. It made the right to form cooperative society. Cooperative society form करने के लिए a fundamental right. ये एक fundamental right बन गया. Article 19. It included a new directive principles of state policy on promotion of cooperative society. It added new part 9B in the constitution, which is entitled as the cooperative society, जो कि आर्टिकल 243 ZH टू 243 ZT.
The new part 9th B contains various provisions, वहाँ पर various provisions रखा गया to ensure that the cooperative societies in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner. It empowers the parliament in respect of a multi-state cooperative societies and the state legislature in respect of other cooperative society और दूसरे cooperative society को respect करना चाहिए to make the appropriate law. उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्रिटिसिज्म है? ए बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया गया है, लाया गया है, दूसरे का आइडिया फॉलो किया गया है. द क्रिटिक्स often that the Indian constitution contains nothing new and original. They described it as borrowed constitution or a bag of borrowings or a hodgepodge constitution or a patchwork of several documents of the world constitutions. However, this criticism is unfair and illogical. This is because the framers of the constitution made necessary modifications in the features borrowed from other constitutions for their suitability to the Indian condition, at the same time avoiding their faults. अगर ये बोरो किया गया है तो उसका जो सही पॉइंट उसको रखा गया है, जो डिमेरिट है उसको हटा गया है, तो ये इलॉजिकल है. While answering the above criticism, ये क्रिटिसिज्म का आंसर देते हुए बी आर अम्बेडकर क्या बोले हैं देखा जाए. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, said, one likes to ask whether there can be anything new in a constitution framed at this hour in the history of the world. More than 100 years have rolled over when the first written constitution was drafted. ये 100 years का पुराना कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्जर्व किया गया, स्टडी किया गया, उसका बाद लिखा गया, उसका एक्सपीरियंस को लिया गया. इट हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी कंट्रीज reducing their constitutions to writing. What the scope of a constitution should be has long been settled. Similarly, what are the fundamentals of a constitution are recognized all over the world. Given these facts, all constitutions in their main provisions must look similar. रूल रेगुलेशन वो सिमिलर होता है सब, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का कॉपीराइट्स नहीं है. This the only new things, if there can be any, in a constitution framed so that in the day are both variations made to remove the faults and to accommodate it to the needs of the country. The charge of producing a blind copy of the constitution of other countries is based, I am sure, on an inadequate study of the constitution. A carbon copy of the 1935 Act. कोई सा क्रिटिक बोलते हैं ये 1935 का कार्बन कॉपी है. प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 into the Constitution of India. Hence, they are called the Constitution as a carbon copy of the 1935 Act or an amended version of the 1935 Act. For example, N. Srinivasan observed that the Indian Constitution is both in language and substance close copy of the Act of 1935. तो N. Srinivasan ऑब्जर्व करते हैं जो कि इंडियन एक्ट 1935 का कुछ टेक्स्ट और उसका कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है. सिमिलरली, सर आइवर जेनिंग्स, ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, said that the constitution derives directly from the Government of India Act of 1935, from which in fact many of its provisions are copied almost textually. Further, P.R. Dasmukh, a member of the Constituent Assembly, commented that, वो comment किए हैं, the constitution is essentially the Government of India Act of 1935 with only adult franchise added. वहाँ पर adult franchise को add किया गया है. The same Dr. B.R. Ambedkar answered
the above criticism in the Constituent Assembly in the following way as to accusation that the draft constitution has reproduced a good part of the provisions of the Government of India Act 1935. I make no apologies. There is nothing to be ashamed of in borrowing. It involves no plagiarism. Nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of constitution. Constitution का copyright नहीं है. What I am sorry about is that और सभी का ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, फीलिंग्स दे सकते हैं. Provisions taken from the Government of India Act 1935 relate mostly to the details of the administration. Un-Indian or anti-Indian. According to the critics, the Indian Constitution is un-Indian or anti-Indian. ये पहले इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था, जो ये अन-इंडियन है और एंटी-इंडियन है, ये ज़्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता है, लेकिन रन तो किया है और स्टेबल गवर्नमेंट भी दिया है, बिकॉज इट डजंट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया. They said that the foreign nature of the constitution makes it unsuitable to the Indian situation or unworkable in India. In this context, K. Hanumantia, a member of the Constituent Assembly, commented, "We wanted the music of Veena or Sitar, but here we have the music of an English band." हम लोग को ज़रूरत था एक म्यूज़िक जो कि बिना सितार का, लेकिन हम लोग को म्यूज़िक मिल गया इंग्लिश बैंड का. That was because our constitution makers were educated that way. Similarly, Loknath Mishra, another member of the Constituent Assembly, criticized the constitution as a slavish imitation of the West, much more a slavish surrender to the West. Further, Laxminarayan Sahu, also a member of the Constituent Assembly, observed the ideals on which this draft constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India. इसका relation नहीं है fundamental spirit of India का. This constitution would not prove suitable and would break down soon after being brought into operation. ये ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं. An un-Gandhian constitution. यहाँ पर गांधी जी का जो विजन था, गांधी जी का जो मकसद था, यहाँ पर वो मिलता नहीं है. According to the critics, the Indian Constitution is un-Gandhian because it doesn't contain the philosophy and ideals of Mahatma Gandhi, the father of the Indian nation. They opine that the Constitution should have been raised and built upon village panchayats and district panchayats. In this context, the same member of the Constituent Assembly, K. Hanmantaya, said that is exactly the kind of constitution Mahatma Gandhi did not want and did not envisage. T. Prakasham, another member of the Constituent Assembly, attributed this lapse to Ambedkar's non-participation in the Gandhian movement and the antagonism towards the Gandhian ideas. Then एल्फेंटाइन साइज, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, जो कि इसका एलिफेंट साइज है बोलकर कोई क्रिटिसाइज करता है. द क्रिटिक्स स्टेटेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू बल्की एंड टू डिटेल में दिया गया है, एंड कंटेंट्स सम अननेसेसरी एलिमेंट्स. सर इवोर जेनिंग्स, a British constitutionalist, observed that the provisions borrowed were not always well selected and that the constitution, generally speaking, was too long and so complicated. In this context, as V. Kamanth, a member of the Constitution Assembly, commented, the
emblem and crest that we have selected for our assembly is an elephant. It is perhaps in consonance with that our constitution too is the blockest that the world had produced. He also said, I am sure the House doesn't agree that we should make the Constitution an elephantine. यहाँ पर सारे इंडिया इज ए लार्ज कंट्री है, बड़ा कंट्री है, और इसका किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा इसके लिए सभी नियम कानून लिखा गया है। तो ये इसको बड़ा साइज नहीं हो सकता है। और पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर लॉयर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे, इसीलिए इसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स भी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लेजिस्टिक एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड। दे ऑफन दैट द legal language and phraseology adopted in the constitution makes it a complex document. The same Sir Ivor Jennings called it a lawyer's paradise. इसीलिए सर आइवर जेनिंग्स बोलते हैं इसको लॉयर्स पैराडाइज बोलकर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एच के महेश्वरी, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्जर्व्ड the draft tends to make people more litigious, more inclined to go to law courts, less truthful, and less likely to follow the methods of truth and non-violence. If I may say so, the draft is really a lawyer's paradise. यहाँ पर लॉयर्स लोग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो लोग लॉ का इस्तेमाल भी किए हैं। इट ओपन्स अप vast avenues of litigation and will give our able and ingenious lawyers plenty of work to do. Similarly, P.R. Dasmukh, another member of the Constituent Assembly, जो कि P.R. Dasmukh जो कि एक मेंबर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसका ओपिनियन था, I should however like to say that the draft of the articles that have been brought before the House by Dr. Ambedkar seems to my mind to be far too ponderous, like the ponderous tomes of law manual. A document dealing with a constitution hardly uses so much of padding and so much of verbiage. Perhaps it is difficult for them to compose a document which should be, to my mind, not a law manual but a socio-political document, जोन सा सामाजिक राजनीतिक एक डॉक्यूमेंट होगा, ए वाइब्रेटिंग, पल्सेटिंग एंड लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, जो कि आदमी लोग अच्छा से रह पाएंगे। लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट, सभी लोग जस्टिस पाएंगे, उस तरह से उसका यही कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था। बट टू आवर मिसफॉर्चून दैट वाज नॉट टू बी, एंड वी हैव बीन बर्डन with so much of words and words which could have been very easily eliminated. These things, and here articles wise दिया गया है, जैसा the union and its territory, it 1 से 4 आर्टिकल कवर किया है। सिटीजनशिप 5 to 11, फंडामेंटल राइट्स 12 to 35, Directive Principle of State Policy 31 to 51, 36 to 51, Fundamental Duties 51A, चैप्टर एग्जीक्यूटिव 50, यहाँ पर सारे आर्टिकल्स दिया गया है। जैसे सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स 308 to 323। आफ्टर दैट 393 खत्म होता है 395। आफ्टर दैट आर्टिकल्स
deals with. These are the things. Then schedules of the constitution. Schedule first schedules name of the states and their territorial jurisdiction. Second schedule provisions relating to the emoluments, allowance, privilege, and so on. Third schedule and the fourth schedule, fifth schedule, sixth schedule, 7, 8, 9, 10, 11, 12, up to 12 schedules दिया गया है. Specifies the powers, authority and responsibilities of municipalities. It has 18 matters. So today we have discussed cover up salient features of the constitutions. This much. Like, share and comment this video. Thank you.